Hello students and welcome back. In this video we are going to discuss about a simple machine that is screw. So screw is an inclined plane. Screw में क्या होता है कि inclined plane होता है and that is a simple machine that we have already discussed. We discussed that it has a area that is higher from one end and lower from the other. यानी एक side उसका high होता है दूसरा side उसका low होता है ठीक है. So it's wrapped around a cylindrical pole और वो किसके साथ wrap around होता है यानी उसके साथ क्या लगा होता है a cylindrical pole. Cylindrical pole होता है इस तरह के shape का right. So हम अगर example लें तो we can take the example of electrical drill. Now, if you see and if you look at the shape of the electrical drill, you can find that it's actually a inclined plane, right? और इस inclined plane के एक side पे क्या लगा हुआ है? A cylindrical pole. तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? Cylindrical pole. And this part is what? It's an inclined plane, right? So why do we use these drills or these kind of machine? We use it to fasten or hold things together. चीज़ों को जोड़ने के लिए और उनको आपस में जुड़े रहने के लिए we use them. We sometimes also use to cut things down. इनको कटिंग करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ड्रिल को. राइट यानी ये मशीन जो सिंपल मशीन जिसको हम स्क्रू कह रहे हैं इसको भी यूज़ किया जा सकता है फॉर कटिंग डाउन द थिंग्स. ठीक है अगर मैं एग्जांपल दूं तो व्हेन व्हेन द कारपेंटर इज मेकिंग अ फर्नीचर. ठीक है तो समटाइम्स क्या होता है कि ही हैज़ टू पुट नेल्स इनसाइड द वुड. So if he is doing it with a hammer, he will be using a lot of force. But instead, if he's using the drill, it is going to be less force used and it will be more easier for him to fasten or to hold the wood together. Alright? तो आप कारपेंटर की एग्जांपल भी ले सकते हैं that uses screw or drill that is a simple machine in order to hold the furniture together. All right. So let's discuss another type of simple machine that is wheel and axle. So an axle is a rod. Axle एक rod को कहते हैं that goes through the wheels. जो wheels के अंदर से गुजरता है. For example, इस bicycle में this is an axle and it's placed on the wheels. ये किस पे place हुआ हुआ है? It's placed on the wheel and it allows the wheel to move with it. ठीक है तो ये क्या अलाउ करता है कि व्हील के साथ मूव अराउंड करता है. ठीक है फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइडिंग अ बाइक सो इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सल दैट व्हील्स के साथ आप भी मूव अराउंड करते हैं. ठीक है हम एग्जांपल लें अगर व्हील एंड एक्सल की तो कार्स आर द एग्जांपल बाईसाइकिल इज एन एग्जांपल वैगन इज एन एग्जांपल एंड इट्स एक्चुअली यूज्ड टू you know move around the things that are heavier and आप उसको easily एक्सेल पर रखकर you can move it around with the help of the wheels. Alright, so let's discuss another type of machine that is a pulley. A pulley is a simple machine. ठीक है ये एक simple machine है that is consisting of a rope and या उसको string कहते हैं and it is wound around a grooved wheel. ठीक है ये किसके इर्द गिर्द होती है वाउंड हुई होती है यानी जिसके ऊपर होती है दैट इज कॉल्ड अ व्हील. ठीक है तो इसको हम कहते हैं कि ये व्हील है. दिस स्पेसिफिक थिंग इज अ रोप या इसको आप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं. ठीक है अच्छा जी अब इसमें ये है कि वन साइड इज एक्चुअली हेल्ड बाय अ पर्सन एंड द अदर साइड इज एक्चुअली बेयरिंग अ लोड. ठीक है अगर ये पर्सन इस लोड को खुद हाथ से उठाए इट विल बी मोर हैवियर
But if he is using a pulley, it will be easier for him to, apply the less force and carry this heavy load. Pulleys are useful to pull objects up, down और sideways. ठीक है, ये यूज कर सकते हैं आप अप मूव करने के लिए या डाउन मूव करने के लिए. ठीक है. Flag poles, cloth lines, curtain rods, window blinds and cranes are example of pulleys used in daily life. ठीक है, हमें इतनी सारी एग्जांपल्स मिलती हैं पुली की, और उनमें से क्या क्या है, क्या बार अगर आप एग्जांपल देखें फ्लैग पोल की. ठीक है, फ्लैग का जो पोल है वो भी कौन सा सिस्टम यूज़ करता है, पुली सिस्टम यूज़ करता है. ठीक है, इसके अलावा आप अगर देखें कि आपके जो कर्टन के रॉड्स हैं, ठीक है, दैट आल्सो यूज़ द पुली सिस्टम, जिसकी वजह से आपके कर्टन्स ऊपर या नीचे होते हैं, राइट. इसके अलावा क्रेन्स जो है, जो हैवी मशीनरी है, दैट आल्सो यूज़ द सिस्टम ऑफ पुली इन ऑर्डर टू यू नो lift up the heavy objects. All right. See you guys in the next video with more simple machines.